Too young. Too young. हाय एवरीवन, एक नए दिन के साथ वेलकम बैक टू द चैनल। जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया हैदराबाद से और बैंगलोर होते हुए एट द एंड ऑफ डे 2 वी वर इन कुर्ग। कुर्ग में पहले दिन हमारी नींद खुली बारिश के गड़गड़ाहट के साथ, लेकिन शायद यहाँ के हवाओं को भी पता चल गया था कि एक मुसाफिर आया है इन वादियों का लुत्फ उठाने, और इसीलिए इन हवाओं ने मानो जैसे इन बारिशों को कहीं दूर छोड़ के आए। Hey, welcome to the day 2 of the trip. Today we are going to cover some of the popular sightseeing spots that we have in Coorg. It's been raining since morning. Hopefully the rain won't persist the whole day. We had a nice breakfast in the homestay that we are staying. We had some good rice and coffee and some puri. So it's a really nice place where we are staying. I put the link of the place in the description, and also I put a cinematic kind of tour of this whole property. It's a really nice property. Next, let's see how the day goes. We'll keep you posted, and we'll keep on adding as we see the places. Bye. बारिश को रुकता हुआ देख हम भी निकल पड़े मडिकेरी फोर्ट की तरफ। मडिकेरी शहर के ऑलमोस्ट बीचों बीच बसा है ये फोर्ट। 17वीं सेंचुरी में बना ये फोर्ट आज भी कुर्ग के इतिहास के बहुत सी कहानियों को संजोए हुए है अपने अंदर। Hi, we are in the Madikiri fort, and let's see how it looks from inside. The scenic beauty is really nice. I will try to get some drone shot over here and put in some cinematic shots over here. It's really nice. So let's see what we can get. Fortunately the rain has also stopped, so we hope that we will have a good kind of stay over here. Let's see. इस फोर्ट के ऊपर से पूरे मडिकेरी शहर का एक शानदार पैनोरामिक व्यू दिखता है। Our next destination was Raja Seat viewpoint. Now we are in the Raja Seat Park. This is another great viewpoint in Coorg. It's basically a park and has a toy train ride. So if you're coming with the family and want to enjoy a toy train ride, there's also a nice place for that. Let's go inside and check out how the view is and how the viewpoint is. और जैसा नाम वैसे ही यहाँ आने पे लगेगा कि जैसे आप कोई राज सिंहासन पे बैठे हैं और पूरी कायनात आपके सामने सर झुका के खड़ी है। आज के साइट सीन का हमारा नेक्स्ट स्टॉप था ओमकारेश्वर टेम्पल।
ছাতা কোথায় গেল? পূজার কাছ থেকে নিয়ে এনে ছাতা ওখানেই দাঁড়ানো আজকে নিয়ে এখানে কিন্তু ভীষণ পূজা তুমি এসো না ওখানেই দেখো এবার ঢোকার লাইন থাকছে My ride is nice. Hey, we are in the Abbey Falls and the view is really great. So let me show some nice shots from here. আমরা হেঁটে চলে যাবো তোমরা গাড়িটা নিয়ে স্কুটারটা বন্ধ হয়েছে Hey, we're having a lunch in a restaurant called Raintree Restaurant. It's pretty popular over here. So let's see how the food is and how the taste are. So I will give some clips of the lunch. চিনি ভালো ভালো ও আস্তে আস্তে কেমন Too yum. Too yum. You must try. Research was good. Must try, right? Must try. Kodava cuisines are rich in flavor. We tried Coorg style chicken curry along with akki roti and rice, and the food was really good. Anyone coming to Coorg, I would definitely suggest to try this restaurant.
After completing the lunch, we reached the Madikiri market. कुर्ग फेमस है अपनी स्पाइसेस, होममेड चॉकलेट, वाइन्स इन सब के लिए। तो इस मडिकरी मार्केट पे आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी इन सब चीज़ों के लिए। Make sure you taste the different flavors of chocolate before buying any one. Ginger coffee is like और इसी के साथ हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन भी खत्म होने को आया। लेकिन इस ट्रिप का लास्ट डे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो इन आवर चैनल। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट विल रियली हेल्प अस टू ग्रो। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट्स कीप वॉचिंग हंग्री मुसाफिर।